Hi everyone, welcome to the lecture 9 of the Ultimate Python course. आज हमें देखिबा ऑपरेटर विषय रे तमनको नोट्स लिखिबा दरकार नै काहे कि ना मु स्लाइड्स और नोट्स बोथ डिस्क्रिप्शन रे दे देछि. So कौन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अछि अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड स्पेशल और टर्नरी ऑपरेटर. जदि तमे माने ऑलरेडी ऑपरेटर विषय जानिछ काहे कि ना सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे सेम ही अछि जदि तमे ऑलरेडी जानिछ ताहले कंप्लीटली ए वीडियोटा को स्किप करि पारिबो किंबा ए भितरु जो पर्टिकुलर ऑपरेटर विषय जानि ना हो सेही पर्टिकुलर ऑपरेटर विषय तमे सेही वीडियो को जाइकी देखि पारिबो. जदि गोटे एक्सप्रेशन अछि a plus b देन प्लस टा कोन प्लस इज द ऑपरेटर जे कि ऑपरेशन परफॉर्म करिता और a और b टा हला ऑपरेंड. सो आउ भी अच्छी जेमिति के प्लस टा एठी हला कोन बाइनरी ऑपरेटर सेमिति यूनरी अछि देन टर्नरी अछि. देन फर्स्ट देखिबा अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें जानि छे नॉर्मल यूजुअल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, फ्लोट डिवीजन. आमे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्राय समस्त जानि थिबे बेसिक एटा मो मोस्टली डिटेल्स रे ए मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोट डिवीजन विषय रे कहिबी. So operators are nothing but symbol which is used to perform operations on variables and value. So operators are कौन symbol जे कि किछिटा operation perform करिथाय variable किंबा value रे. Then operand टा कौन operand is a value or variable जोथिरे कि हमें operation टा perform करिथाम. Then देखिबा arithmetic operator of first addition. So addition हमें जानि छे it is used to add value. Simple a plus b जदि गुटे प्रोग्राम रे देखिबा a रो वैल्यू 5 b रो वैल्यू 7 ताको जदि म प्रिंट करबी a plus b then simply मते आउटपुट रे 12 आसीबो. Then next is your subtraction. Subtraction is used to subtract values. For example एठी देखो a रो वैल्यू 5 b रो वैल्यू 3 जदि म ताको प्रिंट करबी a minus b then output will be give me 2 because 5 minus 3 is 2. The next multiplication same used to multiply values. ये बेसिक हमें समझते जानि छु जदि a रो वैल्यू 5 b रो वैल्यू 3 then print करले कोन आसीबा आउटपुट रे 15 आसीबा because 5 into 3 is 15. The next is your division operator. It is used to divide values. So if a ro value 6 b ro value 3 then simply it will give me after division 2.0. Then next देखिबा modulus operator. So modulus माने कोन हमरो रिमाइंडर माने जदि गुटे वैल्यू को से फर्स्ट गुटे वैल्यू को डिवाइड करबा गुटे वैल्यू रे और जहा रिमाइंडर आसिला सेटा हला हमरो आउटपुट. जदि मो लिखिली जो भी फर्स्ट डिवीजन करिबा देन रिमाइंडर टा हमको से देथाय. सपोज मो लिखिली फॉर एग्जांपल 4 मॉडुलो 3. तो फर्स्ट डिवाइड हबो डिवाइड हला परे मते रिमाइंडर केते आसिला रिमाइंडर आसिला मोर 1. ओके देन मु याको आ गुटे वे रे भी करि परिबी. आ गुटे कोन वे 4 रु तमे एमिते गुटे नंबर खोज जे कि 4 रु smaller than हेतिबा किंबा equals to हेतिबा and also largest हेतिबा. Mean largest we have to find out that number, find out the largest number which is smaller than or equals to 4 and also multiple of 3. तो एमिति नंबर किए से नंबर टा हे जिवो 3. So after getting 3 मु कोन करबी 4 minus 3 मते कोन आसिला आउटपुट रे 1. यदि बुझी पारलनी मु आ गोटे एग्जांपल नै कि कहूची. सपोज अछि 11 मॉडुलो 3. तो आउटपुट रे कोन आसीबो रिमाइंडर कोन आसीबो 3 into 3 9 केते रहिला 2. सो आउटपुट विल बी 3 और रिमाइंडर विल बी रिमाइंडर विल बी 2. तो याकू करिबार आ गोटे वे कोन एमिति नंबर मते खोजिबा को पड़िबो find a number which is largest and also less than or equals to 11 which is multiple of 3. तो मते कोन खोजिबा को पड़िबो find out the largest number which is less than or equals to 11 such that it is multiple of 3. So multiple of
3 लार्जेस्ट हेतिबो जतिके भी 11 रो छोटो अछंती नंबर सेटु सबटु लार्जेस्ट नंबर and also which is less than or equals to 11 and also it should be multiple of 3 तो से नंबर ता किए 9 आसिला तो आफ्टर गेटिंग 9 मु कोन करिवि 11 minus 9 करिवि आउटपुट रे मते आसी जिवो 2 हम एई फर्स्ट वे रे भी करि परिबा बट जेते बडे नेगेटिव नंबर थाए ए सेकंड अप्रोच ता फॉलो करले इजी हे जिवो हमकु टिके नेगेटिव नंबर रे मॉड्यूलस ता परफॉर्म करिबा टिके डिफिकल्ट सेति पई ए सेकंड वे रे कले इजी हे जिवो हम देखिबा एग्जांपल रे तो देखो एठी एग्जांपल नै छी so 11 modulo 4 11 modulo 4 रे 4 into 2 8 remainder will be 3 then 5 modulo 7 5 modulo 17 ए केस रे a रो वैल्यू ता छोटा अछि तो obviously remainder ता 5 ही आसीबो जो केस रे a रो वैल्यू लेस देन b अछि सेति रे directly a value will be the output 5 less than 17 so output रे 5 आसीबो then next देखो example 121 first example 121 modulo 10 10 into 12 120 remainder रे आसिला 1 output रे आसिला 1 then next देखो रहिला next minus 90 modulo 7 या को हमें सेकंड अप्रोच यूज करके बाहर करबा तो मुझे भी ड्रॉ करेगी नंबर 9 minus 90 minus 20 minus 21 तो मते एमिटी नंबर खोजिबा को पड़िबो फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज लेस देन और इक्वल्स टू 90 एंड आल्सो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 7 तो एमिटी नंबर के सी नंबर ता हला -21 -21 आसिला पर मु कोन करबी सिंपली ताको सब्ट्रैक्ट करबी -21 मल्टीपल ऑफ 7 एंड आल्सो इट इज लेस देन -90 और एटा लार्जेस्ट बटे तो -21 पाइला पर मैं सिंपली माइनस करिबी -90 माइनस माइनस 21 आउटपुट कोन आसिला सिंपली आसिला देखि चेक करि करबो आउटपुट इज 2 the next example 21 modulo 7 this one 21 modulo 7 here 21 is completely divisible by 7 so output will be 0 the next one is -11 out 3 देखो -11 modulo 3 so मु ताको फर्स्ट नंबर लाइन रे ड्रॉ करिवि तो मते एमिति नंबर खोजिबा को पड़िबो फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 11 एंड आल्सो व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 -11 रो जे कि छोटा हेतिबा एंड आल्सो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड दिस नंबर लार्जेस्ट हेतिबा अमंग ऑल सो सी नंबर ता किए सी नंबर ता हला -12 is divisible -12 is multiple of 3 also so after getting -12 मैं simply ताको माइनस करबी -11 -12 आउटपुट रे कोन आसीबो 1 आसीबो देखो एठी आउटपुट रे आसीछि 1 then next exponential हमें जानि छु exponential a to the power b means कोन raise the first value to the power of the second value raising one number to the power of the other number this is the symbol a exponential b so it will just raise first value to the power of the second value so here a exponential b 10 to the power 3 here it is 8 to the power 4 here -8 to the power 4 then again it is 8 to the power -4 so accordingly हमको output टा आसीबो then next is floor division में कौन होता है फर्स्ट डिवाइड करिबो गोटे नंबर को आ गोटे नंबर सहित जहां हमको रिजल्ट किबा कोशिएंट मिलिला एबे सेठो से नंबर खोजिबो लार्जेस्ट नंबर जे कि लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ना माने देखो गोटे एग्जांपल देखिरा इटा हला तर सिंबल इटा हला फ्लोर डिवीजन रो सिंबल तो देखो एटी एग्जांपल ले मु नेची सो सिंपल फ्लोर डिवीजन कोन डिवाइड द फर्स्ट वैल्यू बाय द सेकंड वैल्यू देन रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू द रिजल्ट देखो 11 फ्लोर डिवीजन 4 कली मते 2 पॉइंट समथिंग आसिला 2.5 और समथिंग आसिला
ये मते एमिति नंबर खोजिबा को पड़िबो एमिति नंबर जे कि लार्जेस्ट इंटीजर एंड आल्सो व्हिच इज लेस देन 2.5 तो से नंबर टा किए मैंने 2.5 आसीची मोर आउटपुट रे तो मते एमिति नंबर खोजिबा को पड़िबो जे कि लार्जेस्ट हेतिबो एंड आल्सो व्हिच इज लेस देन 2.5 सेटा कि आसीजिबो 2 सेटा हला 2 सो आउटपुट रे मते आसीची 2 आउट एग्जांपल रे देखिबा देखो एठी -5 फ्लोट डिवीजन 3 अछि मोर आउटपुट रे आसिला कोन मोर रिजल्ट ता क्वोशिएंट केते आसिला -1 पॉइंट समथिंग धरिना -1.5 आसिला तबे मते खोजिबा को पड़िबो फर्स्ट मो नंबर लाइन रे ड्रा करूची मोर आउटपुट अछि केते -1.5 सो -1.5 एठी रहइबो -2 तो मते एमिति नंबर खोजिबा को पड़िबो जे कि -1.5 रो एमिति नंबर खोजिबा को पड़िबो जे कि लार्जेस्ट हेतिबो एंड आल्सो व्हिच इज लेस देन और इक्वल्स टू -1.5 तो किए सेटा हेगला हमरो -2 तो आउटपुट रे -2 आसीला आउट एग्जांपल -14 फ्लोट डिवीजन 5 तो आउटपुट रे आसीची रिजल्ट आसीची -2.8 यदि मु ताको नंबर लाइन ड्रा कली -2 then here it is -2.8 then एठी धन रहिला -3 तो मते एमिति नंबर खोजिबा को पड़िबो द लार्जेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन -2.8 तो सेटा किए सेटा हेला -3 तो आउटपुट रे -3 आसी आई होप तो मैंने बुझी पारिथिबो Then next assignment operator. So assignment operator किछि नुह assign करिथाय the value on the right to the variable on the left. Simply it will assign the value. इठी a equals to 10 अछि 10 टा a रे assign कला और result मु जते बोले print कली ताको using print function the output रे मते से 10 value देला. Then next आसिला short hand operator किछिटा अछि जेमिति एटा हम देखुछु addition assignment plus equals to हला गोटे short hand operator यदि मु लिखिली a plus equals to 10 ता माने हला a equals to a plus 10 so this is just a short hand operator यहाँ लिखिबा जहाँ यहाँ लिखिबा तहाँ both are same then next then subtraction assignment यदि मु लिखिली a minus equals to 10 ता माने a equals to a minus 10 then next multiplication रे भी एठी देखो गोटे निया हिचे एग्जांपल से सेम ही a वैल्यू 20 अछि b then a into equals to 10 अछि त माने a रो वैल्यू 20 a multiplication equals to 10 त माने a equals to 20 into 10 आउटपुट रे आसिला 20 त माने जदि मु लिखिली a equals to a into 10 then simply या यहाँ लिखिबा जहाँ a into equals to 10 लिखिबा ता both are same then मु ए वीडियो रे खाली अरिथमेटिक ऑपरेटर इंटीजर रे ही करिकि देखिछि इंट वैल्यू रे करिकि देखिछि फ्लोट वैल्यू रे मु देखिनि काहे कि ना फ्लोट वैल्यू ता टिके डिफरेंट ताको टिके डिफरेंट तार किछि प्रॉब्लम आसी जदि मु फ्लोट वैल्यू रे किछि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करबी सेटा टिके प्रॉब्लम करी थाए तो कौन देखो एठी 0.1 plus 0.2 मु करछि आउटपुट 0.3 आसीबार कथा बट आसीछि कोन एंड रे देखो अलगा वैल्यू आछि एंड रे 4 आसीछि देन नेक्स्ट एग्जांपल देखो 0.1 plus 0.2 equals to 0.3 चेक करबो whether these both are same ना नुहो तो मते ट्रू आसीबा कथा फॉल्स आसीछि इडा मु नेक्स्ट लेक्चर रे कवर करबी कि फ्लोट वैल्यू रे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करले कोन सब प्रॉब्लम है यदि तुमको वीडियो भल लगुची ताहले सब्सक्राइब करो लाइक करो और तुम सांग मानक सहित शेयर करो If you want to take my GATE classes, we go to the website ravindrababurao.in and you are going to see all my GATE classes available there. Okay. So coming to the classes, they are all recorded. Why am I doing recorded? Why am I not doing live classes is, I have thousands of students registering for my courses every year. But then if I conduct a live class, only 20 or 30 people will be there. 20 or 30, that's it. Maximum is 40 I had. The reason is, live classes are little bit wasting your time. See, you cannot watch a live class at 2x speed. You have to watch at the pace at which I teach.
Generally, I will be very slow while teaching. So if you can go through the live classes, you can watch them at 2x speed and you can complete the syllabus very fast. 400 plus hours content is there for GATE. And if you are going to watch them at normal pace, it will take 400 hours. But if you watch it at 2x speed, it will take just 200 hours, right? So if you want any of my GATE classes, GATE Computer Science or GATE DA, the price is just 10,000 rupees. It is very reasonable for the kind of quality we provide. We have test series, we have doubt sessions, we have videos, we have lecture notes for everything. Even you don't have to write any lecture notes. I will provide you lecture notes for every subject. You just have to sit back, watch the videos at 2x speed and revise the notes. Short notes will be provided, long notes will be provided, formulas will be written in the separate notes. Everything will be there provided to you. You don't have to work hard. And coming to, if you are planning to go abroad, we also have study abroad program. You can go through my number. My number is on WhatsApp. My WhatsApp number is in the website. If you are planning to do masters abroad, that is a very good choice. It is better than doing masters in India. So if you are planning to go abroad, we will help you out right from taking the passport to getting the visa, US visa, right? So we will help you out in the entire process. Okay. So do visit the website, see what is happening there. Even DSA course is there for 5,000 rupees, which is both in Python and C++. Okay. So thank you so much.